Okay, audible and visible now. Yeah. So today we have the last lecture on ionic equilibrium. We have two things left. One is what I say theory of indicators. That's one part, and there is something called Jotter ion related. There is something called isoelectric point or isoionic point. Those two parts are remaining. Everything else is covered. Okay. We are entering into the next part, which is called theory of indicator, or in particular theory of pH indicators. So what are these pH indicators? They are in general highly colored organic substances. And what those substances are going to do when you are doing the titration, if the pH is changing, these substances are going to change their color. Okay, that's the way they are going to act. अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, that we are going to see. ठीक है कि ये यही हमारा टॉपिक है. That's our topic in the discussion. ये जो organic substances है ना, इनको typically how can we represent? If like I'm having an organic substance which is acting like a pH indicator or which is acting as pH indicator, उसको कैसे दिखा सकते हैं? तो we can show it like कि इसका ionization होगा. If it is like this, तो it will be releasing H plus and I minus. Now if you see H plus का another source is already present in the solution जिसके through हम लोग titration की बात कर रहे हैं. Like if I am having aqueous solution of HCl and if you are titrating it with NaOH, so already there is some H plus in the solution, which is the dominant H plus. So that H plus की quantity is going to decide that what will be the extent of this ionization, and that's why that is going to decide how much will be unionized part and how much will be the ionized part. Is it okay? Clear a point? So now if I say this was the unionized part, this is acting as acid, and this is ionized part, so this is acting as base. Now we are getting a conjugate acid base pair. Hai na? The property of these substances is that the acid part or the acid form of the indicator will be having a particular color, and the remaining basic part or the conjugate base part will have a different color. That means if I'm changing the H plus or the pH, which is happening during the titration, hai na? If I'm doing the titration of HCl or CS3COH by NaOH or NH4OH, definitely it is going to change the pH of the solution. And during change of pH of solution, this ratio in between ion minus and HIN is going to change. Hai na? If it is changing, so that's why the solution ka color will also be changed. Now what we want that कि जैसे ही equivalence point is reached na, it should show you a significant change in the color so that we can see it. What happens na? There is another method to track the equivalence point also, that is called pH meter, which is a costly business. And that's why definitely students को तो बिल्कुल नहीं करना है. So this is a सस्ता वाला business, cheaper business. इसमें क्या है कि these are not very costly and a very small amount of this will be required during the titration, and that's why what we say कि we are going to and this is interesting one, this involves colors, है ना? So that's why when you're doing the titration, ऐसा लगेगा कि there is some magic happening here, क्योंकि जैसे reaction complete होगा, if you have chosen the appropriate indicator, the solution का color will be changed by itself. So the question is how to choose the appropriate indicator for a particular titration. That is the topic of discussion, main topic of discussion in today's lecture. ठीक है? यहाँ तक any doubt? So if you see whatever equation we have got, H plus into ion minus by HIN is giving you KIN. KIN is called here, जैसे equilibrium constant कहते थे वैसा ही इसको we call it indicator constant. So ion is not indium, पहली बात. ठीक है, इंडियम इज एन एलिमेंट. तो आयन से ऐसा मत समझ लेना कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम एच आयन वेयर आयन इज इंडियम. इट इज इंडिकेटर का रिप्रेजेंटेशन है. तो दिस के आयन विल बी कॉल्ड इंडिकेटर कांस्टेंट. एंड इफ यू सी, if I say this ratio, if you take this ratio, this is the ionized and the unionized form, or we can say base is to acid का ratio है, which is depending on this ratio in which H plus is involved. So this thing is going to change during titration. And if this is changing, so ratio of base to acid is changing. So definitely that is going to change the color of the solution. Is it okay?
Now, so how this is working or what type of color we are expecting from it, but because it involves the H plus in the reaction itself, first thing we have already decided that when the pH will be changing, H plus in the solution will change. So ratio of the base to acid is going to change and that is going to change the color. That means the extent of ionization of the indicator will depend on the pH of the medium. Is it okay? The other way, the question in other way is, will the presence of indicator will affect the pH of the solution also? Because it is also the source of H plus or OH minus, and that depends on the nature of the indicator. But if I say ki it is going to affect the pH, so that was not the purpose of the indicator. Na? Indicator ka purpose tha just be there and when required change your color. That was the only purpose of indicator. So if I say that it is also going to change the pH, so it is disturbing the calculation, hai na? Because pH ka change was required only during titration, through titration. And that's why if it is going to change the pH or if it is going to affect the pH, it is not sufficing the purpose. It is not fulfilling the purpose, है ना? तो होता क्या है इसमें actually? We say that कि indicators are so intense in color ना that we are going to require a very small amount of these indicators, and that's why practically they are not going to affect the pH of the solution. Is it okay? So extent of ionization of the indicators will be affected by pH of the solution, but pH of the solution is practically remains unaffected due to presence of the indicator. Understood the point? Okay. So that's why we'll write both the points. First point is, if I'm talking about indicators ka acid to base ratio, if I'm talking about that, okay. So wait, yeah. So if you see the first note, what we are writing after ionization of indicator in solution, the conjugate acid base pair, which we have already discussed, IN minus and HIN. So HIN is acting as acid, so IN minus will be acting as base. So now we are saying that if there is some ionization that involves equilibrium H plus ion also, and that's why pH of the solution is going to affect the extent of ionization, and extent of ionization is deciding the relative ratio of the base and the acid part, which are having different color. So ultimately it is going to affect the solution ka color. Is it okay? The second point which I discussed, that these substances, these indicators are so intense in color that only a small quantity of indicator is required, and that's why pH of solution remains practically unaffected. Theoretically to jara bhi nikala to that is affecting the pH, but practically it remains affected due to presence of indicator. So they are going to work well if you have chosen the appropriate indicator. Is it okay? Any doubt up to this point? Anyone having any doubt? Okay. So the next point is, what will be the point at which we are expecting the change in color? Now the simple thing is, if I say IN minus and HIN both are present, I'm just representing the conjugate acid base pair as HIN and IN minus. So HIN and IN minus, simply saying that if I say acid color is HIN ka color and base color is IN minus ka color, so if HIN is more in number of moles or in concentration, then HIN ka color will become the dominant color. And if IN minus is more than HIN ka concentration, then we'll say IN minus ka color, which is called base color, will become the dominant color of solution. So based on that, we can decide that at what pH this substance is going to change its dominant color. Okay. So उसके लिए दो cases है. If I want acid color to be dominant, देखो क्या होगा? We will say that कि अगर HIN is greater than IN minus, that will change the that will be having acid color as the dominant color, because HIN का color was called the acid color, है ना? This is when we say acid color, it is the color of HIN. Now simple सी चीज है, HIN greater than IN minus हुआ तो that is going to give you the acid color as the dominant color. Now, if you see the topic carefully, I have written dominant color of the solution. It is theoretical condition. बाद में we'll talk about some practical things. We'll discuss that. But theoretically, definitely, if HIN is more than IN minus, we are going to see, we are going to have acid color as the dominant color. I've changed my word. Okay, just be careful about that also. I'm not going to see, I'm saying that
we are going to have acid color as the dominant color. First thing. Now, already we had the relation that In minus by HIN was KIN by H plus. So, if I'm saying HIN is greater than In minus, so definitely we are going to say 1 is greater than In minus upon HIN, which means 1 is greater than In minus by HIN को हम लोगों ने लिखा था KIN upon H plus है. And that's why we are saying in this case, when H plus will be greater than KIN, when H plus will be greater than KIN, you will get acid color as the dominant. Is it okay? And what does that mean? अगर pH के language में बोले तो minus log लगा दो तो sign direction of the inequality will be changed. So we'll say pH when pH is less than pKi, then you will have acid color as the dominant color. Is it okay? अब इसी का ठीक उल्टा कर दो तो we have got the condition, so we can find out the another condition also. If I want base color to be the theoretically dominant color, then what will be the condition? So definitely exactly opposite, pH greater than pKin will give you base color as the dominant one, है ना? So we are saying base color का मतलब है this is the color of In minus, and that's why we are saying कि this time In minus should be greater than HIN, which says this In minus upon HIN will become should be greater than 1. That means KIN upon H plus, KIN upon H plus should be greater than 1, which means H plus should be less than, H plus should be less than KIN. That will give you the condition for base color to be the dominant color. And if you write minus log of it, so direction will again be changed. So now this time we'll say pH greater than pKin pe, we are going to get base color as the dominant. Is it okay? Clear? Now if I just try to summarize it, just एक diagram से देख लो. मान लो for the example, if base color is pink, acid color is like कोई भी एक white मान लो, जैसे मैंने एक diagram दिखाया यहाँ पे. We have got pH के different ranges में, if I simply say this pink color or pinkish color, whatever it is looking like, if that is the base color and this white is the acid color, pH equals pKin पे के ठीक नीचे acid color is the dominant color है ना, this is the dominant color, and we are saying इस range में this pH pKin से ऊपर base color is the dominant color. What does it mean? ड्यूरिंग टाइट्रेशन पीएच में इंक्रीज, पीएच में डिक्रीज, दैट डिपेंड्स कि नीचे क्या है, क्या ऐड कर रहे हैं. इफ आई एम हैविंग एसिड जिसमें बेस ऐड कर रहे हैं तो पीएच इज गोइंग टू इंक्रीज. इफ आई एम हैविंग अ बेस जिसके सॉल्यूशन में वी आर एडिंग द एसिड, देन पीएच इज गोइंग टू डिक्रीज. बट व्हाटएवर इज हैपनिंग, पीएच इज चेंजिंग, एंड इफ द पीएच का वैल्यू इज क्रॉसिंग पीकेआईएन, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, the moment it is crossing the pKin का value, the color will be changed, dominant color will be changed from pink to white or white to pink, है ना. एंड दैट्स व्हाट वी वांट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, है ना. वो कब चाहिए अपने को? एग्जैक्टली इक्विवेलेंस पॉइंट पे चाहिए. सो इफ समवन सेज कि यू वांट द बेस्ट इंडिकेटर फॉर अ टाइट्रेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकली दैट इंडिकेटर फॉर विच pKin विल बी इक्वल टू द pH इक्विवेलेंस पॉइंट, है ना. अगर pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट एग्जैक्टली pKin के बराबर हो गया तो देन विल से कि वहां पर दैट विल एक्ट एज द बेस्ट इंडिकेटर, क्योंकि एग्जैक्टली वहीं पे वो कलर चेंज करने वाला. इज इट ओके? क्लियर है? सो द पॉइंट इज, द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन इज, इफ आई वांट 1 minute.
हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन ये है कि पहली बात की एंड पॉइंट जिसको हम देयर इज अ टर्म कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर. व्हाट डज दैट मीन? जो pH इक्वल्स pKin है, that value is called the end point of indicator, because उसको जैसे ही pH का वैल्यू जैसे ही उस पॉइंट को क्रॉस करेगा, it will change the color, and that was the sole purpose of indicator, to change the color at appropriate time, है ना? तो इसको end point बोलते हैं. And we say that कि if you want the best indicator for a titration, theoretical discussion है पूरा, then we will say that indicator for which end point is coinciding with the pH at equivalence point, that will become the best indicator, है ना? Is it okay? So the conclusion is, first thing, what is end point of the indicator? We are saying that the moment the pH at which color of the indicator is going to change from one to another, that point will be called end point. And वो point हम लोग जानते हैं कि pH का value is equal to pKin is the end point of an indicator. Now if that point is exactly coinciding with the pH at equivalence point, then we will say कि we have got the best indicator for a titration. बट ये सारी कहानी जो थी वो थ्योरेटिकल स्टोरी थी. ठीक है? व्हाई आई एम सेइंग थ्योरेटिकल स्टोरी? क्योंकि इंडिकेटर का यूज करने में तीन चीजें आती है. एक होता है हमारा इंडिकेटर इटसेल्फ दैट वी आर गोइंग टू यूज. देयर इज अ कंटेनर इन विच वी आर परफॉर्मिंग द टाइट्रेशन. एंड द थर्ड थिंग इज द मेन इशू, एंड दैट इज we the people are the main issue of this thing, that we are going to observe it, and the observation requires human eyes, and human eyes is having limitation in the sensitivity. अगर देखो अभी मैंने क्या बोला था, एच आई एन ज्यादा हुआ तो एच आई एन का कलर इज द डोमिनेंट, आई एन माइनस ज्यादा हुआ तो आई एन माइनस का कलर इज द डोमिनेंट कलर. नाउ इमेजिन द सिचुएशन, एच आई एन जरा सा ज्यादा हुआ, एंड इफ इट वाज हैविंग कलरलेस, दैट मींस इफ इट वाज कलरलेस, एंड दूसरा वाला पिंक है, वो जरा सा कम होने के बाद इट विल नॉट लुक लाइक कलरलेस, है ना? वो बीच का कोई कलर रहेगा, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग टू डिसाइड कि विच वन इज द डोमिनेंट कलर. या आई एन माइनस जरा सा ज्यादा हुआ ना, तो एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा इसमें कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है. एंड दैट गिव्स यू द पॉइंट की, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन आईज सेंसिटिविटीज, वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व एग्जैक्टली कि कब एच आई एन जरा सा ज्यादा, जस्ट ज्यादा हो गया या जस्ट कम हो गया. तो इतना माइन्यूट डिफरेंस वी कैन नॉट ऑब्जर्व. एंड इंडिकेटर का the basic point is, we are going to observe the change in the color. We are not having any instrument which is not going to make any fault. We are going to observe, we the human are going to observe it, observe the color change during the titration. और वो बहुत थोड़ा बहुत चेंज होगा ना, तो we are not going to observe it. I'll show you an example. So we are moving to the next topic, that if I want to have the observed dominant color, I'll just show it by a diagram. If you just see, I'm giving you practical example. Like I'm giving you an image in which I have shown three indicators, और उनका कैसा बिहेवियर होता है विद चेंज इन पीएच. नाउ इफ यू सी दीज थ्री इंडिकेटर्स, अभी फिनोफ्थिलीन की बात हो, इसी की बात करते हैं. जरा ध्यान से देखो, यहां तक ऐसा लग रहा है कि दिस इज कलरलेस इसके नीचे, है ना? और यहां से ऊपर एग्जैक्टली लग रहा है कि नाउ वी कैन से इसके ऊपर इट इज पिंक, है ना? और यहां से नीचे डेफिनेटली ये पॉइंट जो यहां से नीचे, डेफिनेटली वी कैन से व्हाइट और कलरलेस. कलरलेस नॉर्मली बोलते हैं, वी कॉल इट कलरलेस नॉर्मली. सो yeah, so if I am saying colorless is the color of the acid color, then ये जो रेंज है ना, दिस इज द रेंज ऑफ कंफ्यूजन, है ना? So when I was saying कि exactly जब HIN ज्यादा हुआ तो HIN का कलर इज द डोमिनेंट कलर, IN माइनस जरा सा ज्यादा हुआ तो IN माइनस का कलर इज द डोमिनेंट कलर, ये कंफ्यूजन रह जाएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. And that's why simply saying HIN ज्यादा रहेगा IN से तो acid color is the dominant will not suffice the purpose. We want observed dominant color, and for that HIN को significantly larger than IN minus होना पड़ेगा. Then we'll be able to observe it as the dominant color. वैसा ही IN minus को significantly ज्यादा होना पड़ेगा HIN से. Then we can say कि we can observe it to be the dominant color.
So simply being the dominant color is not going to satisfy the purpose. Being the observed dominant color is going to satisfy the purpose, because we are going to observe it, then only we'll decide ना color change हो गया, ये दिखना चाहिए अपने को, ऐसा नहीं कि color change हो गया और अपने को पता ही ना चले. And that's why what we are going to talk about कि हम लोगों को ये रेंज पता करना पड़ेगा कि कौन से रेंज से नीचे उसका एक ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर आ रहा है, कौन से पीएच के नीचे, और कौन से पीएच से ज्यादा होने पर वी कैन ऑब्जर्व द अदर कलर टू बी द डोमिनेंट कलर. ठीक है, तो ये कहानी है. जितना कैलकुलेशन में सिंपली मैंने ये लिख दिया था ना, HIN ग्रेटर देन IN माइनस, तो एसिड कलर इज द डोमिनेंट कलर. Simply another case, IN minus greater than HIN is the dominant color. The base color is the dominant color in that case. उससे काम नहीं चलेगा. HIN को IN माइनस से कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा होना पड़ेगा. So we are going to add a factor like A times IN minus से ज्यादा हुआ तो we will be able to observe it as the dominant color, and that A is going to be definitely more than 1. Normally if nothing is written for a theoretical indicator, we say कि it should be 10 times or more, क्योंकि मैंने पहले भी आयनिक में कई बार बोला है, जब कोई चीज दूसरी चीज पहले के सामने 1/10 से कम होती है, then only we'll say कि दूसरी वाली चीज को we can ignore. तो हमारे ह्यूमन आइज का भी वही केस है. इफ नथिंग इज गेट रिटन तो विल से कि 10 टाइम्स या उससे ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली विल बी ऑब्जर्विंग लाइक HIN इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ IN माइनस, देन विल से कि एसिड कलर इज द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर. एंड वैसे ही IN माइनस शुड बी 10 टाइम्स HIN से ज्यादा, देन विल से कि बेस कलर विल बी द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर. इज इट ओके? तो ये जो 10 मैंने बोला, दैट इज when the information is not given but required, then we'll be taking A is equal to B equal 10. But if we are talking about practical indicators like methyl orange, like methyl red, like litmus paper, like phenolphthalein, ये जितने ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, पूरी मोटी मोटी बुक आती है इस पे. वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू दैट जोन. जो रिक्वायर्ड पार्ट है वही करेंगे. एंड दैट पार्ट इज आई वांट ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर. हम लोगों के पास दो केस फिर से बनाने पड़ेंगे, बट इट विल नॉट बी सिंपली ग्रेटर देन और लेस देन. इट विल बी ग्रेटर देन A टाइम्स ऑफ अनदर थिंग और ग्रेटर देन B टाइम्स ऑफ द अदर. ठीक है, तो वो पार्ट हम लोगों को कवर करना पड़ेगा. सो जो पॉइंट मैंने बोला, व्हाई वी नीड द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इन द सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आईज. ठीक है, विल नॉट बी एबल टू observe it if there is no significant difference in the relative concentrations. If there is significant difference in the relative concentration of the acid form and the base form, then only we'll be able to observe it as the dominant color. That was my point. Is it okay? चलो अभी आते हैं कैलकुलेशन पे. जो मैंने बताया, अभी अपने को A और B जैसा एक फैक्टर डालना पड़ेगा. तो देखो सिंपली जब मैंने A का फैक्टर डाल दिया एसिड ग्रेटर देन बेस वाले में, तो यहाँ पे जहां pH लेस देन pKin आ रहा था, दिस टाइम वी हैव गॉट pH should be less than even pKin minus log A से नीचे आना चाहिए. When we are saying that HIN should be A times IN minus the concentration, where A is definitely going to be greater than 1. वैसा ही if I am saying IN minus should be greater than B times of HIN, तो अब ये बता रहा है कि जो पहले आया था pKin greater than pH और pH less than pKin पे आ रहा था ये काम. 1 मिनट, ये उल्टा हो गया. दिस शुड बी, तो pH ग्रेटर देन जो हम लोग लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो pH ग्रेटर देन pKn पे लास्ट टाइम आया था. दिस टाइम इट शुड बी pH ग्रेटर देन pKn प्लस log B. तो जाके विल बी एबल टू ऑब्जर्व वन पर्टिकुलर कलर एज द डोमिनेंट कलर. इज इट ओके? चलो, तो नाउ जैसे मैंने बताया, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, इसको देखो जरा. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, अगर ए बी के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो विल टेक A इक्वल्स B इक्वल्स 10. बट प्रैक्टिकली यूज्ड इंडिकेटर्स के लिए विल ऑब्जर्व दैट नंबर कि वो कितना आ रहा है, क्योंकि लॉग A का वैल्यू ऐसे तो प्लस माइनस होना है ना. लॉग A एंड लॉग B विल बी 1 and 1 है ना. इफ आई एम टेकिंग A का वैल्यू एंड B का वैल्यू 10, तो दैट मींस pKn -1 से नीचे आया तो एसिड कलर वाज द डोमिनेंट कलर. pKin +1 से ऊपर आया तो बेस कलर विल बी द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर, है ना. बट इन जनरल आई टोल्ड यू कि अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, प्रैक्टिकली यूज्ड इंडिकेटर की भी बात अगर एक्चुअली करें, तो वी आर सेइंग नाउ pH अगर pKin माइनस log A से कम हुआ, नीचे हुआ, तो only will be able to observe it is the acid color as the dominant color. Similarly pH को pKn से ऊपर नहीं, pKn plus log B से ऊपर होना पड़ेगा, then only we can say that base color will be the observed dominant color. इसका मतलब इस बीच में जो रेंज आया है, that is actually the range of confusion, है ना.
जो मैंने अभी भी यहाँ डायग्राम में बात की थी, दिस इज द रेंज ऑफ कंफ्यूजन. इसमें वी कांट कमेंट ओवर द डोमिनेंट कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व इट. इज इट ओके? एंड दैट्स व्हाई ये जो रेंज है ना, इसी रेंज को कहा जाता है द कैरेक्टरिस्टिक पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर. व्हाट डज इट मीन? इसके लोअर लिमिट से नीचे वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व द डोमिनेंट एसिड कलर, एंड इसके अपर लिमिट से ऊपर विल बी एबल टू ऑब्जर्व द बेस कलर एज डोमिनेंट कलर. इज इट ओके? So if I say, for example, if I say pH range for phenolphthalein is, like I'm giving you just one example, और ये numbers थोड़े बहुत देखो ना, ये बाउंड्री भी बहुत ही वेग सी दिख रही है ना, एग्जैक्ट बाउंड्री तो होती नहीं है. दैट्स व्हाई यू विल बी गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट बुक्स. सो अभी मैं रफली एक बता देता हूँ. मोस्ट ऑफ द बुक में जो मिलता है वो 8 से 9.8 मिलता है. कभी कभी 10 लिखा रहेगा, कभी कभी इधर 8.1 लिख देंगे, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा. सो इफ आई से दिस इज द केस, तो हम लोग बोलेंगे इफ आई एम हैविंग पीएच लेस देन 8, तो एसिड कलर इन दिस केस दैट इज कलरलेस is the observed dominant color. वैसा ही if I say pH is greater than 9.8 होगा, then only we'll say base color, which in this case is pink, is the observed dominant color. Is it okay? Clear है? डायग्राम से देख लो एक बार, so that you can realize this whole thing what we are talking about. So like phenolphthalein का ये example already मैंने prepare किया हुआ है. I'll just show you. If you see this thing, like इसका वैल्यू जो आ रहा है, ये वैल्यू फॉर phenolphthalein, this value is equal to 9.8 for phenolphthalein, and this value is 8 for phenolphthalein. That means 8 से नीचे आया तो वी आर सेइंग द एसिड कलर इज द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर, और 9.8 से ऊपर जाएगा देन विल से कि बेस कलर इज द ऑब्जर्व डोमिनेंट कलर. इसका मतलब 8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.2 पे विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द पर्टिकुलर कलर एज द डोमिनेंट कलर. इज इट ओके? नाउ व्हेन वी हैव गॉट दैट, अब एक बात बताओ, अभी मैंने बोला था इफ नथिंग इज रिटन देन ए एंड बी को 10 लेने का है. यहाँ साफ साफ दिख रहा है इट इज नॉट 10, है ना? क्योंकि अगर वो 10-10 रहता तो दोनों के बीच का डिफरेंस शुड बी 2. दिस टाइम इट इज नॉट 2. व्हाई इज दैट? लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फेनोफ्थलीन के लिए जो पीके आईएन होता है ना, पीके आईएन फॉर फेनोफ्थलीन, एंड यू कैन ऑब्जर्व नाउ, is equal to, that is around 9.3 for phenolphthalein. Can you tell me what is the value of A and B in this case? Then you will get the exact idea ki why this range is going to vary in different cases. Why we can't have every time we can't have A and B equal to each other and equal to 10. So like if I write, we can see that pKin minus log A is equal to 8 दिख रहा है ना, which means log A is actually 9.3 minus 8, which is 1.3. That means A is actually 10 raised to 1.3. Can you tell me the value? काफी टाइम ये मैनेज करने को आएगा, ये तुमने पूछा भी था आई थिंक तभी तो. Log 2 is how much? 1 plus 0.3. So 10 raised to 0.3 is nothing but 2. So we can say this is 10 raised to 0.3 into 10 raised to 1, and that becomes 2 into 10. It is actually 20. And second point is, if I say pKin plus log B,
and that is equal to 9.8, which means log b is going to be 0.5 है ना. So root 10 is how much? 3 point something है ना. So we'll say b is going to be 10 raised to 0.5 or root 10, and root 10 is approximately 3 point something है ना. Now what I told you that generally if nothing is written we say कि 10 times से ज्यादा होना चाहिए. Why we have got in one case 20 times से ज्यादा होना चाहिए, and why we have got in another case only 3 times से ज्यादा होना चाहिए? That depends on the intensity of the color also है ना. If you want colorless to be the observed dominant color, उसको बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, उसके सामने पिंक को ना के बराबर होना पड़ेगा, then only will be able to observe it as the dominant color ना. क्योंकि कलरलेस में जरा भी पिंक ज्यादा हो गया ना तो फिर उसके बाद तो पिंक दिखने लगेगा, and that will create the confusion. And that's why if you see a का वैल्यू यहाँ पे 20 टाइम्स आ रहा है और b का वैल्यू सिर्फ 3 पॉइंट समथिंग टाइम्स आ रहा है, कि पिंक को डोमिनेंट कलर बताने के लिए इवन इफ इट इज 3 टाइम्स मोर देन दैट ना, कलरलेस वाले क्वांटिटी से, then even then we can observe it to be the dominant color. But अगर colorless को you want to be the dominant color, observed dominant color, then it has to be 20 times more than the pink color. Is it okay? That was the sense of these numbers. Is it okay? And that's why I told you कि nothing, if nothing is written we take 10 and 10, तो pKn plus minus 1 का रेंज आता है. बट इफ प्रैक्टिकली फाउंड इंडिकेटर के लिए जिनको हम लोग यूज करने वाले, वहां पे वी नीड टू हैव दिस वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द टू कलर्स विद विच वी आर डीलिंग. इज इट ओके? तो आगे भी डेटा में देखोगे हर जगह ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर किसी कलर की इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही है तो वहां से रेंज का डिफरेंस जो है ना, पीकेएन का डिफरेंस विल बी लेस. और जहां किसी की इंटेंसिटी बहुत कम दिख रही है वहां से पीकेएन का गैप विल बी मोर. ठीक है. लाइक जो प्रैक्टिकली हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, दो इंडिकेटर हैं जो सिलेबस में है, जो रेगुलरली पूछे जाते हैं, बाकी कुछ देगा तो दे विल गिव यू द डेटा. बट ये दो चीजों के बारे में, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोक्सिलिन, हम लोगों को जानना है, डिटेल में पढ़ना है. इसको हम लोगों ने डबल इंडिकेटर में भी यूज किया हुआ है ना, वॉल्यूमेट्रिक के टाइम पे. तो ना इफ यू सी मिथाइल ऑरेंज एंड द फेनोक्सिलिन आर इंपॉर्टेंट. तो एक का पीएच रेंज देखो एसिडिक रीजन में जा रहा है 3.1 से 4.4, और दूसरे का 8 से 9.8 which we have already discussed. Now again if you see 3.5 से 3.1 का गैप इज 0.4 only, but 4.4 से इसका गैप इज 0.9. and why is that? See what I'm Yellow saying? is a lighter color, so for it to be seen. जैसा चार्ट पिछली बार बनाया था पेनोक्सिलिन के लिए, if I say for methyl orange, again if I am having that script, in fact I am having that script, I'll just show you that. If you see that particular thing, if I just show it like this, अभी देखो यहाँ क्या, वो बीच वाली लाइन is pH equals 7 है, उससे don't get confused. So if you see this is the range जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं. यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से रेड तो आ चुका है, बट ये येलो को डोमिनेंट बताने के लिए ऑलमोस्ट ये वैल्यू आ रहा है ना, तो साफ साफ पता चल रहा है कि येलो को ज्यादा होने के लिए इसकी इंटेंसिटी कम होती है, रेड की इंटेंसिटी इज वेरी हाई है ना, एंड दैट्स व्हाई. और वो जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो जो इसका पीकेआईएन आ रहा है दैट इज 3.5 ओनली. तो 3.5 हैज लेस डिस्टेंस फ्रॉम 3.1. तो यहाँ इधर ये 3.1 है, ये 4.4 है, डेफिनेटली 3.5 इज नियरर टू दैट 3.1, क्योंकि रेड को बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है. दिस इज द पीकेआईएन वैल्यू, this is pkin which is equal to 3.5. तो ये गैप देखो कम है, this gap is 0.4 only, and if you see this gap is 0.9. and that's logical because yellow को dominant होने के लिए बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, और रेड को डोमिनेंट होने के लिए उतना ज्यादा नहीं होना पड़ेगा. Is it okay? बट एटलीस्ट दिस सिचुएशन इज बेटर देन दैट कलरलेस वाला सिचुएशन. वहां देखो ना 20 टाइम्स होना पड़ा था. यहाँ इफ यू सी दैट गैप ना 10 raised to 0.9 भी ले लोगे तो दैट विल बी स्लाइटली लेस देन इवन 10. So we don't need even 10 times, it is slightly less than that. Okay, so that's why I told you कि AB का value 10 तभी लेना है if information is not given and we need that information for a theoretical indicator. कोई indicator का direct question आ गया तो वहां पे लेना है.
अदरवाइज विल बी टेकिंग प्रैक्टिकली जो ये दो इंडिकेटर की मैंने बात की है उनको जरा ध्यान में रखने का, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट इन द टाइट्रेशन. ठीक, इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं. अब कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट use of pH indicators during acid base titration. So if I'm trying to use an indicator, the condition is, होता क्या है, इफ आई गिव यू एनी कैलकुलेशन ना, मान लो मैंने तुमको एक कैलकुलेशन दिया कि आई एम हैविंग HCl का सॉल्यूशन 0.1 m एंड आई एम ट्राइट्रेटिंग इट विद NaOH का सॉल्यूशन. चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देन विल गेट दैट आइडिया. इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, so a question is 100 ml of 0.1 m aqueous solution of HCl is titrated by 0.1 m aqueous solution of NaOH. Calculate the pH when the added volume of NaOH solution is, question number 1, 0, question number 2, 99 ml, question number 3, 100 ml, question number 4, 101 ml, very large quantity. और NaOH solution is added for a very long time, ऐसा बोल देगा. ठीक है, try to solve this one. Why 2 first? When there's no NaOH added, there's only One, HCl. So sorry. हाँ, tell me. when there's no NaOH added to the solution, there's only HCl. So it's just minus log H plus. So that is 1, 10 is to minus 1. You have taken the volume here. 1 second. It is molarity, not moles. Yeah, I understood. For the first question, we'll say H plus is 10 raised to minus 1. We'll say pH is 1. We have started at that situation. Is it okay? If I say second one may, now we have got HCl plus NaOH giving NaCl plus H2O. Before reaction, this was total 10 millimoles. And when I have added 99 ml of 0.1 m, so we have added 9.9 millimoles. Now, after reaction, Sir, one doubt. yeah, 1 millimole is 1 by 1000 mole? yeah, milli is that only, 10 raised to minus 3. Okay, this will be 0. And that's why we'll say after reaction, we have got extra H plus, and because of that, solution will still remain acidic, but H plus ka concentration will be 0.1 upon how much? It is not 100 because 100 ml to पहले से था. We have already added 99 ml, so it has become 199. Okay, so that is
1/1990, we can say it is approximately 1/2000, just for the calculation, which means it is 5 into 10,000 से ऊपर नीचे multiply कर दो, तो 5 into 10 raised to minus 4, and which gives you pH का value 4 minus log 5, which is 3.3. Is it okay? Now, if I solve the third question, third का बताओ. 7. 7, क्योंकि it will be completely neutralized, है ना? That is the equivalence point. So if you see this one plus H2O, so before reaction ये भी 10 मिलीमोल हो गया and ये भी 10 मिलीमोल हो गया, and that's why we are going to say that they are going to be completely reacting, and the solution का pH will be decided by the pure water, and that's why we'll say H plus will be H plus of water, and that is 10 raised to minus 7 at 25 degrees C, so pH is 7. Now, if I ask you just the fourth question, this time HCl plus NaOH has given you NaCl plus H2O. Now, in this case, before reaction, we have got 10 millimoles of it, but because we have added 101 दिया था या 110 दिया था? 101. So 101 will have 10.1 millimole, and that's why after reaction, last time ये HCl was 0.1 millimole बचा था जब हम लोगों ने second question solve किया था. This time this is 0.1 millimole, and total volume is again almost same. So after reaction, OH minus will become 0.1 upon 100 plus 101. Again, that is very close to, we can say ये जो आया था ये 2010 आएगा, which is very close to 1/2000 जैसा ले लेंगे. So that will give you, it is equal to 5 into 10 raised to minus 4. So this time POH is 3.3. So pH has become 14 minus 3.3, and that is 10.7. Fifth one, it is going to be 30, 30. So when NaOH is added for a long time, इसका मतलब है लाइक मान लो 100 ml सॉल्यूशन था, उसमें मैंने 10 लीटर NaOH का सॉल्यूशन डाल दिया, तो बहुत पहले वो न्यूट्रलाइज हो गया. नाउ इट इज ऑलमोस्ट कि ऊपर का सॉल्यूशन नीचे आकर बैठ चुका है. व्हेन NaOH इज एडेड, अच्छा ये पॉइंट जो था ना, ये दिस टाइम इट वाज इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस वाज इक्विवेलेंस पॉइंट, है ना. नाउ इफ यू सी एडेड फॉर a very long time, so we will say OH minus will be very close to, not exact but very close to 10 raised to minus 1 only, which means POH will be 1. So that means pH is 30. Now after doing all these calculations, जरा ये सारे numbers एक साथ रख के देखते हैं. यहाँ पे pH का value is coming 1. यहाँ पे pH का value is coming very close to 3.3. यहाँ पे pH is coming 7. यहाँ पे pH is coming very close to 10.7. Yeah. And यहाँ पे pH is coming 30. I'm not interested in the extreme cases, but I'm interested in these three parts. Imagine doing this titration by yourself. तुमने NaOH add करना start किया. The moment before, just before the equivalence point, your pH of the solution was 3 point. The moment when the equivalence point has reached, within one drop, 1 ml का difference रख के मैंने लिखा है. Within one drop, it is going up from 3.3 से सीधा 7, और वहां से अगले ड्रॉप में it is going from 7 से 10.7. So if you see, within one or two drop, you are going to move from here to here, है ना. इसका मतलब ये 7.4 का डिफरेंस विद इन 2 ड्रॉप आने,
And that's the property of the equivalence point itself. Whenever you are performing any acid base titration near equivalence point, you'll always observe a very sharp change in pH is observed near the equivalence point, है ना? Is it okay? और यही जो sharp change in pH within 1-2 drop हो रहा है ना, I want someone to indicate me this moment only, है ना? और वो जो मूवमेंट है वो क्या है, वेरी शार्प चेंज इन पीएच के बीच में, इफ आई एम हैविंग एन इंडिकेटर व्हिच इज चेंजिंग इट्स कलर, देन वी कैन से कि दैट विल बी एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर, है ना? तो मान लो मैंने स्टार्ट किया था पीएच इक्वल्स 1 से, नो स्टार्ट इमेजिनिंग दीज थ्री जिनका मैंने टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस वाज द टेबल। नो आई स्टार्ट इमेजिनिंग, मैंने क्या बोला था, स्टार्ट किया था पीएच इक्वल्स 1 से, उसके बाद 99 ml जब ऐड किया था तो ये हो गया था 3.3, उसके बाद 100 ml which was the equivalence point, यहाँ पे it was becoming 10 sorry 7, and 101 ml within 2 ml it is going to 10 raised to 10.7, and after that फिर जब आगे बढ़ते गए and then we have had a long, for a very long time volume of NaOH is very high, then it is going to reach 13। तो ये देखो ये जो point है, this is the change of, this is plus 7.4 within 2 drops, है ना? अब ये जो चेंज है, अभी जरा किसी एक को देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज। व्हाट विल बी द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज एट दिस पॉइंट, इफ आई से मिथाइल ऑरेंज? Uncertain. हम्म, Uncertain. तो समहाउ नहीं ना, अच्छा ठीक है, अनसर्टेन है, और इसके ठीक पहले इफ आई आस्क यू, इसके ठीक पहले नॉर्मली, तो व्हाट वाज द कलर? Red or orange. रेड ऑरेंज है ना, नॉर्मली रेड लिख देते हैं बट मिथाइल ऑरेंज है, इसमें देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज, इफ यू ऑब्जर्व इट ना, ये देखो ना, यहाँ रेड से ऑरेंज होता हुआ दिख रहा है, ओके? तो रेड टू ऑरेंज होता हुआ येलो जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन रेड टू ऑरेंज, तो डेफिनेटली वी कैन से ऑरेंज तो है। नाउ इफ आई गो फॉर दिस पार्ट, यहाँ कौन सा कलर चेंज दिखेगा? Yellow. डेफिनेटली येलो है ना, एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड ना। So even if the pH range of methyl orange is only 3.1 to 4.4, in this titration, it will be a successful indicator. Within 2 drop, it has changed its color from red orange to yellow. Is it okay? So for the titration involving strong acid and strong base, definitely we can use methyl orange. What about phenolphthalein? Methyl red will be more appropriate, but methyl orange to be practically we can use it, because red orange is going to change to yellow just within 2 drops, you know, that we can also. Okay, what about phenolphthalein? What are the color at this point? ये तो मिथाइल ऑरेंज की कहानी थी। इफ आई से phenolphthalein, not tell me, Colorless. before this point it was colorless, after this point Pink. pink, है ना? तो इट डजेंट मैटर कि उसका पीकेआई एंड पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट से मैच करता ही नहीं करता है, दैट्स द प्रैक्टिकल पार्ट वी आर टॉकिंग। if it simply changes the color in the sharp range of that change in pH near equivalence point, we can use that as appropriate indicator. So we can use methyl orange or methyl red or phenolphthalein when we are dealing with titration involving strong acid and strong base। हाँ हर्ष, कुछ क्वेश्चन था क्या? Yes, There was sir. a question. Yeah. Sir, ideally, isn't phenolphthalein the better indicator in this case? मतलब एक कैलकुलेशन करके मैंने दिखाया तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है? अभी नंबर भी मैंने बताया नहीं कि वो बहुत ही वेग नंबर है, समटाइम्स इट बी गेटिंग 3.3 भी लिखा रहेगा, ठीक है, कहीं कहीं वो भी लिखा रहता है, तो वी कैन से कि ठीक है, प्रैक्टिकली वी कैन से दैट इट इज आल्सो इंक्लूडेड। सो इफ दे आर आस्किंग यू व्हिच इंडिकेटर शुड बी यूज्ड इन दिस केस, विल से बोथ, ठीक है, प्रैक्टिकली, क्योंकि ये नंबर जो है ना वो बहुत ही वेग है, अलग अलग जगह अलग अलग दिखता है, तो मैं वहीं पर 3.3 लिख देता हूँ, तो फिर तुम कहते कि राइट है ना। Okay, so practically मैं बता रहा हूँ, the practical part is we say that कि they are both appropriate indicator for the titration which involves strong acid or strong base. Is it okay? ठीक है? Now, so that means this was one message. तो इसको हम लोग summarize
इसकी समरी देख लेंगे, बट जस्ट आई वांटेड टू शो यू कि कुछ कुछ टाइट्रेशन के मेरे पास ग्राफ मिले मुझे, विच आई एम शेयरिंग, कि वो कैसा दिखता है पीएच का चेंज। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, हाँ नंबर्स अलग हो सकते हैं, बिकॉज उन्होंने क्या लिया था कंसंट्रेशन, दैट आई हैव टू चेक देन अगेन, कि कितने पे आ रहा है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये नंबर चेक करना पड़ेगा। बट यू कैन ऑब्जर्व इट कि ये देखो ना, ये नंबर 2 से जरा सा ज्यादा पर स्टार्ट हुआ, और विद इन 1 और 2 ड्रॉप इट हैज रीच्ड अप टू 11 के रेंज, है ना। दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, है ना। तो इफ इट इज इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस बीच में, अभी देखो इस बीच में हमारा रेंज जो है वो मिथाइल ऑरेंज का रेंज भी इधर ही है ना, मिथाइल ऑरेंज का रेंज भी इधर ही था कहीं, चेंज ऑफ पीएच वाला। दिस वाज द पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज, है ना, 3.1 से लेकर 4.4 वाला। एंड फिनोफ्थलीन का रेंज इधर कहीं था, 8 से लेकर 9.8 जैसा। दिस वाज द रेंज ऑफ फिनोफ्थलीन। तो if that range is coming in the range of sharp change in pH, this is the range for methyl orange, or methyl red is even more appropriate if you ask me. Or methyl orange is having almost same, not exactly same, but almost same. ऑरेंज ही लिखता हूं मैं, बिकॉज क्वेश्चन में तुमको मिथाइल रेड देता नहीं, सब मिथाइल ऑरेंज देते हैं, दे एक्सेप्ट इट कि ठीक है, वी कैन यूज दैट बटन्स। ओके, ये काम उल्टा भी हो सकता है मैं स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करूं। इफ यू जस्ट सी द डायग्राम, वो कैसा टाइट्रेशन का डायग्राम आएगा, you'll be observing it like this. इस बार ऊपर से ग्राफ नीचे आएगा, बट स्टिल दैट शार्प चेंज इन पीएच को ऑब्जर्व कर सकते हो। यू हैव दैट रेंज ऑफ phenolphthalein here which is lying in this sharp change in pH within 2 drops, है ना। within 2 drop we can see observe this sharp change in pH, and if you see ये मिथाइल ऑरेंज वाला पार्ट भी इधर ही कहीं लाई कर रहा है ना। तो phenolphthalein is also lying in this range, and methyl orange is also lying in this, but जैसे मैंने एक किसी को वीक कर दिया, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वीक एसिड का टाइट्रेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट विल हैपन। दो चीजें The होने वाली है इसमें। पहली बात तो ये होगी कि स्टार्ट का जो पीएच होगा जरा सा हायर होगा, 1 जैसा तो नहीं होगा, है ना। इफ आई एम हैविंग 0.1 एम एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ CH3COH, उसका पहले इसका कैलकुलेशन मैंने करवा था, इट वाज कमिंग इन द रेंज ऑफ 2.85। उसके बाद क्या होगा, बिफोर रीचिंग टू इक्विवेलेंस पॉइंट ना, बीच में बफर सॉल्यूशन है ना। CH3COH का रिएक्शन विद NaOH will give you CH3CONa. So CH3COH plus CH3CONa will give you a buffer solution, and buffer solutions are known to be resisting the change in pH. तो यहाँ जो मैंने बताया इक्विवेलेंस पॉइंट के पास you will be observing a sharp change in pH. Near buffer solution you will be observing a very slow change in the pH. तो I'll just show you the diagram, उससे अपने आप पता चल जाएगा। If I am having a weak base जिसका titration we are doing by using strong base, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की लाइन नीचे थी, ये काफी ऊपर आ गया पहली बात तो, जैसा मैंने बताया 2.85 जैसा। इफ आई एम हैविंग CH3COH का 0.1 है तो 2.85 आता था। और बीच में यहाँ देखो, यहाँ जो लाइन आ रही है ना, ये देखो ये लाइन इज रिप्रेजेंटिंग कि यहाँ पर देखो बहुत ही स्लो चेंज आ रहा है ना। दैट मीन्स दिस वाज द केस ऑफ बफर सॉल्यूशन, दिस इज द केस ऑफ बफर सॉल्यूशन। वो तो डेफिनेटली शार्प चेंज इन पीएच वाला रेंज तो वहां पे नहीं आएगा, पर बफर सॉल्यूशन विद, अगर मैं बोलूं A- इज इक्वल टू HA वाला केस, तो वहां पर पीएच विल बी पीके के बराबर होता था, लाइक दैट वाज इक्वल टू 4.74 फॉर एसिटिक एसिड। नो डेफिनेटली ये पीएच तो उसके काफी बाद स्टार्ट हुआ है ना। अब अगर मैं बोलूं ये नंबर, मान लो कि ये जो शार्प चेंज इन पीएच वाला नंबर है, इट लुक्स लाइक 6 पॉइंट समथिंग। मान लो इफ इट इज लाइक
6.3 और 4, ऐसा कुछ, जस्ट अज्यूमिंग कि उस रेंज में ये वैल्यू आ गया। और ये दूसरा रेंज जो दिख रहा है वो तो स्टिल इट इज इन द रेंज ऑफ 11 जैसा है ना, 11 से ज्यादा ही है, 11.7 और 8 ऐसा कुछ बोल सकते हैं, चलो 6 लिख देता हूँ टू बी ऑन द सेफ। नाउ इफ आई ट्राई टू पुट द रेंज ऑफ द मिथाइल ऑरेंज, वो तो इधर ही कहीं रह जाएगा ना, नीचे ही कहीं रह जाएगा ना इसके। दैट मीन्स इफ आई एम पुटिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, क्या होगा कि अभी बफर सॉल्यूशन बना है जहां पर पीएच वॉज 4.74, उससे पहले ही वो कलर चेंज करके बैठ जाएगा। इज इट ओके? If I try to use methyl orange in this case as indicator, it will change the color of the observed color of the dominant solution much before reaching the equivalence point. And that's why we are saying कि it will not be appropriate to use methyl orange or methyl red in this case as indicator. But phenolphthalein is still the choice, because if you see this number 8 से 9.8 का range अभी भी यहीं आ रहा है ना, we are saying if phenolphthalein can still be used. So the summary of this whole discussion is, if you have got weak acid involved in titration, avoid using methyl orange or methyl red, है ना, बिकॉज उसने रेंज ऑफ द शार्प चेंज इन पीएच था ना उसको ऊपर कर दिया है। मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेंज will already be changing its color without reaching near the equivalence point. Is it okay? Clear है? Any doubt up to this point? अब इसी में if I'm involving a weak base, अभी देखो क्या होगा, क्या होना चाहिए बताओ? What will happen if I'm using weak base? And मान लो weak base like NH4OH का titration में HCl से, that's the case. If I'm having this case, tell me what will happen. अभी देखो इफ आई यूज फेनोफ्थलीन ना, तो फेनोफ्थलीन बिकॉज वीक बेस आ चुका है, फेनोफ्थलीन का रेंज तो ये था ना, दिस वाज द रेंज फॉर फेनोफ्थलीन। Phenolphthalein will be changing its color from pink to colorless much before the sharp change in pH वाला range is coming, है ना, arriving, and that's why ये range of phenolphthalein का है, that is not appropriate in this case. So we'll say it is not appropriate. But now we have got 3 से 4.4 वाली जो कहानी हम लोग, या 3.1 से 4.4 वाली कहानी पढ़ रहे थे, that is still lying in the sharp change in pH, है ना, sharp change in pH यहाँ से start हुआ यहाँ तक गया है। So इस रेंज में we have got 4.4 वाला from 3 से लेकर ये वाला जो रेंज है, that is still applicable, है ना, this is methyl orange. This can be used, this is appropriate indicator in this case. Is it okay? So now the message or the learning from this discussion is, if you have got weak base involved in the titration, avoid using phenolphthalein. You can use methyl orange or methyl red. Is it okay? Clear है? तो इसी का एक दूसरा डायग्राम भी है मेरे पास, डेटा में भी डिफरेंट बट डायग्राम इज इंडिकेटिव। अगेन इफ आई एम हैविंग, मान लो 0.1 m अमोनिया था, वैसा ही ऊपर वाला ही केस जैसा है, उसमें जस्ट अच्छे से दिखाया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस डायग्राम। इफ यू सी दिस वन, साफ साफ पता चल रहा है phenolphthalein will be changing its color in the buffer region itself, which was not appropriate to do, because buffer के बाद काफी बाद will get the equivalence point, and sharp change in pH वाला indication देखो यहाँ बताया हुआ है, this is the sharp change in pH वाला range, और ये range के अंदर we are getting methyl red, यहाँ लिखा है देखो, मैंने पहले भी बोला था, if you go appropriately तो methyl red is better choice than methyl, ठीक है, बट मिथाइल ऑरेंज को भी प्रैक्टिकली, मिथाइल ऑरेंज को भी प्रैक्टिकली वी कैन टेक इट। इज इट ओके? एनी डाउट? एक लास्ट केस है, इफ आई टॉक अबाउट, मैंने वीक एसिड भी ले लिया और वीक बेस भी ले लिया, व्हाट विल हैपन? ग्राफ नीचे से भी उठ जाएगा, ऊपर से भी नीचे दब जाएगा, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, काफी ऊपर से स्टार्ट हुआ
और बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, और ये शार्प चेंज इन पीएच वाला पार्ट ही नहीं आ रहा है। And already we have discussed that if you involve weak acid in titration, avoid using methyl orange. If you have got weak base in solution, avoid using phenolphthalein. If you have got weak acid as well as weak base in the uh, titration, avoid using both simply. So in this case, what we'll do, we can't use appropriate indicator, we should use pH meter. Okay. So in this type of titration, we say that indicators are not used. Not used. What is used in this case is we use pH meter. Is it okay? तो चलो इसको समराइज कर लेते हैं. Summary is in the form of a question, but already मैंने सारे points बता दिए. We'll just write it and we'll answer it. So the summary is, if I have been asked that what type of indicator out of methyl orange and phenolphthalein we can use in the different titrations, so we'll say in the first case we'll say कि both can be used, है ना? That's from practical point of view. Again, I'm telling you, methyl orange will be written as the answer, so we need to accept it. If you ask me, methyl red was better choice. Okay, that we have already understood. But normally we'll say कि इसमें both. If I'm having weak acid involved in it, we'll avoid using methyl orange. I'll use phenolphthalein. है ना? If I have got weak, यहाँ पर वीक एसिड था इसलिए हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज को अवॉइड किया. वैसे वीक बेस आ गया, विल अवॉइड यूजिंग फेनोफ्थलीन, सो विल यूज मिथाइल ऑरेंज. What about the last case? Will we pH use meter. the, yeah, pH meter is used. Is it okay? Sir, one doubt. Yeah. So, for cases involving strong acid and strong base, JE will never ask something like which is the most appropriate base to use, right? Most indicator. The language should be very clear after giving the data in that case. Okay. Qualitatively, we accept both the cases. है ना? The most बोल के सिर्फ एक ऑप्शन दे तो I'll choose the phenolphthalein in that case. है ना? Yes. वो that question will be visible कि वो visibly वो बता रहा होगा कि नहीं मैं दोनों accept नहीं कर, है ना? Then only we can say. But otherwise I told you कि different books में जो answers दिए रहते हैं, it accepts both the things as an appropriate indicator. तो आइदर दे शुड गिव यू कि डेटा दे दिया, शार्प चेंज इन पीएच वाला पॉइंट बता दिया, देन आई विल से कि नहीं है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. अदरवाइज अप्रोप्रिएटली वी कैन यूज बोथ थिंग्स. तो जो लर्निंग आई यहाँ से, दो लर्निंग है. पहला लर्निंग है कि इफ यू हैव गॉट वीक एसिड इन्वॉल्व्ड इन द टाइट्रेशन, अवॉइड यूजिंग मिथाइल ऑरेंज. if you have got weak base involved in the titration, avoid using phenolphthalein. That's one learning. ये तो आ ही गया है. इसके अलावा एक और टाइट्रेशन था जिसकी बात ऑलरेडी मैंने कर दी है वॉल्यूमेट्रिक में, तो उसकी कहानी जस्ट शॉर्ट में मैं बता देता हूँ. Na2CO3 का टाइट्रेशन, इफ आई एम डूइंग यूजिंग HCl और H2SO4, इन दैट केस इफ यू सी, उसको मैंने वहां भी डिस्कस किया था कि पहले तो ऑल द Na2CO3 विल गेट कन्वर्टेड इनटू NaHCO3. phenolphthalein will change the color during this equivalence point, बिकॉज उसी समय का पीएच जो आता है ना उस रेंज में आता है जहां पर phenolphthalein changes its color. But after that, if you want the final equivalence point or the second equivalence point where everything will get converted to H2CO3, वहां जो है that has come in the acidic region, and the methyl orange is the appropriate indicator जिसको वहां पर हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. इफ यू सी, ऑलरेडी मैंने बता दिया था ये, जस्ट अ विजिबल एक डायग्राम है जो विजिबली तुमको एक्सपीरियंस दे देगा. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें जहां पर पीएच वेरी क्लोज टू 8.35 जैसा आ रहा है, तो वो पार्ट जो है इट विल बी अप्रोप्रिएटली इंडिकेटेड बाय phenolphthalein. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड और द फाइनल इक्विवेलेंस पॉइंट,
then we'll say कि वहां पर पूरा का पूरा H2CO3 में कन्वर्ट हो गया. pH का वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 3.6 प्लस माइनस, दैट विल डिपेंड कि कितना कंसंट्रेशन लेकर चले, बट वही रेंज है, 3 से 4 के बीच का रेंज है. दैट्स व्हाई इट विल बी अप्रोप्रिएटली इंडिकेटेड बाय मिथाइल ऑरेंज. और ये कहानी को ग्राफिकली भी दिखाया है कि Na2CO3 का टाइट्रेशन करना स्टार्ट करोगे, बीच में बफर मिलेगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ बफर सॉल्यूशन. थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया है. और 1 मिनट, दिस वी हैव गॉट, थोड़ा सा गड़बड़ है ये नंबर्स, क्योंकि देखो यहाँ पर ये अगर मैं इसको 8 9 10 11 12 13, हाँ, तो ये 8 दिया है, ये 9 दिया है, ये 10 दिया है. ये पूरी कहानी जो बीच में, अच्छा ये 8.35, चलो ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ. तो 8 तक जा रहा था, ये थोड़ा सा गड़बड़ है. फिनोफ्थलीन का डायग्राम इज स्लाइटली रॉन्ग. ये पूरा इधर तक जाता है, यहाँ तक फिनोफ्थलीन है. ठीक है, क्योंकि 8 से 9.8 मैंने बताया था, एंड दैट्स व्हाई इट इज कवरिंग दिस. ठीक है, तो इट विल बी ऑल्सो कवर्ड. इसका मतलब है, और ये थोड़ा सा ज्यादा दिखाया हुआ है, 9.8 है, थोड़ा सा गलत. तो बट अप्रोप्रिएटली वी कैन इंडिकेट द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी अप्रोप्रिएटली इंडिकेटेड बाय फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर. और ये दूसरा वाला 1 2 3, ये लगभग ठीक दिख रहा है. और ये मैंने वैल्यू बोला भी 3.7 जैसा दिखता है, तो ये कहीं बीच में यहाँ आएगा. सो इट कैन बी इंडिकेटेड बाय मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि शार्प चेंज इन पीएच के पहले द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज वाज येलो, एंड आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व कि इसके नीचे जो है वो रेड या ऑरेंज जैसा. ठीक है, तो दिस वाज द अनदर पॉइंट. Now, theoretically, they can give you now any indicator. First, we need to decide कि sharp change in pH कितना है. तो equivalence point का plus minus 1 ml पे pH निकाल दो. That's the practical way of doing it. And वो जो range आ रहा है, if that range, in that range, if the color of the observed dominant color of the phenolphthalein is, or the given indicator is changing, that indicator will be the appropriate indicator. Is it okay? Sir, one doubt. हाँ. So phenolphthalein will like the change from Na2CO3 to NaHCO3, the first change that phenolphthalein will be able to show. Okay, I'll But show you that diagram also. You're and saying the second change, H3PO4 wala? sorry sir, You're talking about Na2CO3 or what? Na2CO3 to NaHCO3. Ah, that it will show. But the second one it won't show. The second one methyl orange will show. Yeah, because that change, that sharp change in coming, like यहाँ से यहाँ पर देखो है ना, तो in that part phenolphthalein has already changed the color, है ना. तो it has already become the white or colorless, and that's how उसके बाद तो पता चलेगा कि उसने पहले बोल दिया कि बंद कर दो टाइट्रेशन, है ना. तो when we are using this double titration वाला case or whatever we are taking Na2CO3, I'll be using phenolphthalein as well as methyl orange. अगर मैंने phenolphthalein लेके यूज किया है, उसने जैसे ही कलर चेंज किया, मैं बोलूंगा we have got the first equivalence and we can do the appropriate calculation. उसके बाद I'll be using the same titration मैं करूंगा, but while using the methyl orange as indicator. जब methyl orange कलर चेंज करेगा, I'll say कि whatever we have done now, we have reached at second or final equivalence point. Okay. But sir, if methyl orange is unable to indicate both of them, then why like in volumetric you had said that when we use Na2CO3 with methyl orange we use the N factor as 2, but it's not indicating both equivalence points, right? Second equivalence point. For the second equivalence point, N factor of Na2CO3 is 2 ना. Oh, okay, specifically for the second one. Okay. Yeah. Okay. तो what we are saying, जिस समय मिथाइल ऑरेंज ने कलर चेंज किया है, उस समय द कंप्लीट Na2CO3 हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू H2CO3 ना. इसका मतलब इट हैज कैप्चर्ड 2H प्लस, एंड दैट्स व्हाई इट्स N factor is 2 है ना. Okay. It was not phase wise, it was the complete reaction. Okay. चलो लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज कॉल्ड ज्विटर आयन वाला पार्ट. वो कहाँ से आता है, एक इट विल बी रिपीटेड इन अ चैप्टर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, जहां पर हम लोग एमिनो एसिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. बट राइट नाउ द पार्ट विच इज रिलेटेड टू आयनिक इक्विलिब्रियम, वी आर गोइंग टू कवर दैट. तो ज्विटर आयन की बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एमिनो एसिड. एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. R can be anything, it can be H, it can be CH3, and there are many groups जो कि attach करके we get different type of amino acids, artificial or natural. Is it okay? So this is one part. Will this carbon be optically active or chiral or not? Will this carbon be chiral or not? It will be chiral. Yeah, it will be chiral. It will be chiral definitely. Definitely. Okay, I am having a case.
where this side chain can be hydrogen only. In that case, it will not be optically active. And there is just one amino acid which is optically not active. In that R ki jagah par we have got H, and that is considered to be the simplest amino acid, which is called glycine. Okay, so glycine is the only amino acid in which जो group मैंने बोला है ना उसकी जगह we observe that it has got hydrogen in place of R, and that's why it is optically not active. And if the carbon is not chiral. So I'll give you that first example of glycine itself. If I'm having a glycine, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. पहली बात तो already I told you कि it is not chiral. This carbon is not chiral. So that's why this molecule is also optically inactive. So the simplest amino acid is glycine, which is the only optically inactive amino acid. That's one part. Now, if you see, I have written two pKa values. Why? One of them is for when COH loses the H, and one of them is for when the carbon itself loses the H. No, that is not carbon. Basically, ये amino acids के solution जो होंगे ना, we are going to maintain the pH of it first thing. And when we are maintaining the pH, if pH is too low, if it is very low, that means H plus is very high. If H plus is very high, this lone pair of nitrogen will also accept H plus. And that's why that will become NH3 plus. And in that case, the Ka value corresponding to that NH3 plus is called Ka. Is it okay? So I'll just show you the structure key in different pH range, what type of form you'll be getting for glycine. देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे. We have got one COOH, and इसके लिए we are saying कि it is having pK1 value, and this is having pK2 value. Is it okay? Now, when I'm trying to increase the pH, what is happening? Which will first release the H plus? Which will first release the H plus? COH. COH, because that is having more acidic strength. And ऐसे भी मैंने number भी लिखा है, तो definitely this is 2.34 and this is equal to 9.60. Okay. Now, if you see the net charge of this form, net charge बताओ जरा कितना है? +1. It is +1. What is the net charge of this thing? 0. 0. Definitely it has released one H plus, so it has got 0 charge. And what is the net charge of this? 0. ये NH2 plus नहीं है. This is NH2 only. It is not NH2 plus. It is simply NH2. Okay. So -1. Yeah. So this is having net charge -1. Now, if you see the part in which we have got net charge 0, it is not completely neutral in a sense that some part is having plus and some part is having minus, but the net charge is 0. This part is called the deuterion, which is having cation as well as anion, but the net charge is becoming 0. So that form is called deuterion. यहाँ का net charge we are saying is -1. This is not present. इसको I'll just remove it. But this is not, no charge over it. Okay. So now this form is called the deuterion. Can we say that deuterion is amphiprotic? Yes. क्योंकि जब वो राइट जा रहा है तो इट इज रिलीजिंग H प्लस, जब वो लेफ्ट जाएगा तो इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस. So that's why deuterion is actually amphiprotic. It is amphiprotic in nature. And if you remember, हम लोगों ने एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस के एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच देखा था ना, if this is K1 and this is K2, we have learned that कि if I am having this form only, तो फिर pH was half into pK1 plus pK2. So if I have given you the value when only this middle wala form is present, we'll say
we'll say if deuterion is the dominant form, then we are saying कि pH का value will become half into 2.34 plus 9.60. If you calculate it, we are getting 11.94 by 2, which is very close to 6 जैसा 5.97 जैसा जाएगा. So now if I ask you, I am having the solution of this glycine and it is not conducting any electricity. What do you mean by that? I'm having aqueous solution of glycine, but it is practically observed कि ये electricity conduct नहीं कर रहा है. It's What in do the you mean? pH range where the deuterion is present. Okay, so deuterion will not move towards anode or cathode under the applied electric field because the net charge is zero. So if it is not conducting the electricity, definitely molecules are not moving. And if molecules are not moving, that means molecule is having net charge equal to zero. है ना? So what we say, that is a particular point of pH, or that is a particular value of pH, which is equal to the pH of the deuterion ka form only, and that is called isoelectric or isoionic. ठीक है? So when they are asking you pi value बताओ, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन है, वो है अभी मैंने R की जगह H रखा था ना, R की जगह CH3 भी हो सकता है, बट R की जगह CH2COOH भी हो सकता है. अगर ऐसा हो गया, we will have a third K value again. Or if that R में NH2 group is involved, we'll get a third K value again. क्योंकि NH3 plus बन के रहेगा and that will have third K value. Whatever value is there, this COOH is always said to have pK1 value and this is said to have pK2 value irrespective of its number. ठीक है, मतलब वो हो सकता है वो लीस्ट एसिडिक हो, फिर भी उसके नंबर को विल रिप्रेजेंट इट बाय pK2. ठीक है, so that's a convention for amino acid that pK1 will correspond to COOH only of the chiral carbon वाला या जो middle carbon है उस पे attached, and NH3 plus वाला pK will be the pK of pK2. Is it okay? So it COH, doesn't matter yeah, what ionizes first. Like what ionizes first doesn't it matter. doesn't matter. It is the convention that NH3 plus वाले को pK2 ही बोलना है. अगर कोई तीसरा pK आ रहा है तो उसके लिए विल राइट pK3. इज इट ओके? ऑर्डर में कभी कभी हो सकता है pK2 ज्यादा हो जाए pK3 से, दैट इज पॉसिबल, बट इवन देन विल से कि दैट वाज pK2 का. दैट्स वन पॉइंट. एंड दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इफ इट इज नॉट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, उस पॉइंट का pH विल बी called isoelectric point or isoionic point. And definitely we are knowing that it is the case when we are having dominant form as the deuterion as the dominant form of the amino acid, है ना? ये कब आएगा? At pH equals pi, definitely we are going to say that pH will be equal to pi. वो तब आएगा when the dominant form of the amino acid is the deuterion. Okay. If I ask you another example like this, एक दूसरा दे रहा हूं जहां R is not H, it is simply CH3, that is called alanine, and K values दिए हुए हैं. If I say कौन से तीन फॉर्म बनने वाले हैं with a change in pH, if I just indicate it, so can you form the three forms of this alanine? सबसे लेफ्ट में क्या बनेगा, देन बीच में क्या बनेगा, देन राइट में क्या बनेगा? So if I say this was the form, so we have got H, we have got COOH, low pH की बात कर रहा हूं मैं, we have got CH3 which will not be affected, but this will become NH3 plus, है ना? So this is the cationic form. And इसके बाद if I'm increasing the pH, so this was the range of low pH one, and then if I increase the pH, सबसे पहले कौन लूज करेगा H plus? CO minus. COH. COH, sorry. This will become CO minus and this will remain as 3 plus. Now this has become the deuterion.
तो अगेन वी आर सेइंग कि इसके पीके को वी आर कॉलिंग इट pk1 and इसके pK को we are calling it pK2. Okay. So next time NH3 plus will be losing its H plus, and that's why it will become NH2, and this will become COO minus, and this is an ionic form of this amino acid. So यही ज्यूटर आयन है, and that's why if they are asking you PI, it will again be half pK plus 1 plus pK2. If it is asking PI बताओ, we'll say half pK1 plus pK2. Numbers are not very different than the other previous case. क्योंकि H की जगह CH3 आया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लेकर आ रहा है. वी आर सेइंग दिस विल बी 2.34 प्लस 9.69, एंड इफ यू चेक दिस 11 12.03 बाय 2, तो अप्रोक्सीमेटली या फिर 12.03 है ना, तो 6.015 ऐसा आ जाएगा ना. हाँ हर्ष, Sir, here the PI is higher due to instability caused by CH3. फिर से. Here, like the as compared to earlier, the PI is एसिडिक higher स्ट्रेंथ, here acidic strength will become less due to plus because IH. of CH3, right? Yeah. Okay, now I'm giving you two special examples. I'm having one case where I'm having group R के अंदर भी we have got something जिसको देखना पड़ेगा. So now if I write aspartic acid, in that case R will itself have some COH group present. Like if I give you this case, how many forms we are going to get? First question. 4. 4 मिलेगा ना. थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ इसको कि कैसे दिखेगा ये. We have got COOH, we have got H, we have got NH3 plus रहेगा in low pH range, and ये वाला जो part है ना, this is CH2 COOH. So now again by convention, देखो COH is more acidic than NH3 plus. Even then we'll still call this one, इसके pK को we call it pK1, इसके pK को we'll call it pK2, and even if it is greater less than pK2, we'll call it pK3. Okay, that is by convention. Now the next form will be, कौन सा वाला सबसे पहले लूज करेगा? pK1 वाला, 2 वाला, 3 वाला. PK1. नंबर दे दिया है, नंबर देख के भी देख लोगे कि जिसका लिस्ट वैल्यू दैट इज गोइंग टू लूज इट फर्स्ट, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई pK1 कौन सा वाला है. तो pK1 इज गोइंग टू लूज इट, एंड दैट इज COH वाला, ये वाला है ना. तो वी आर सेइंग वी हैव गॉट CH2 COH, यहाँ पे H है, यहाँ पे COO माइनस हो जाएगा, विल गेट NH3 प्लस. इज इट द ज्विटर आयनिक फॉर्म? Yes. Yes, because net charge is 0, so this is ज्विटर आयन. Now after that, what will lose the next H plus? 2 वाला या 3 वाला? hmm? इसको PK3. इसको हमने बोला यहाँ पे pK1 यूज किया. दिस टाइम COH अगेन विल बी लूजिंग ना. सो यहाँ पे जो रिलीज है ना, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू pK3 वैल्यू, एंड दैट विल फॉर्म another substance which is CH2. I'm writing here COO minus. ये already COO minus था. We have got H here. We have got NH3 plus. Now as a last point, this NH3 plus is going to lose the H plus, and that will make it CO minus, NH2, H, and CH2, COO minus. है ना? Now still this is the Jupiter ion form. अभी if I ask you PI बताओ क्या लिखेंगे? Half of PK1 plus PK2 plus PK3 plus PK. नहीं, सिर्फ आगे पीछे का करते हैं. That substance उसका और उसके पहले उसके conjugate acid का pK. Okay, so it is pK1 plus pK3 का by 2, and that number gives you, this number will be, एक भी mistake किया ये चला जाएगा. This is the easiest question in ionic equilibrium, इसको lose नहीं कर सकते. The numbers are 2.10 plus 3.86, and that gives you 5.96 by 2, so 2.5 and 0.48. So this will become 2.98.
Okay, any doubt? एक लास्ट केस ले रहे हैं, then we'll finish the chapter. So the last case is if I am having R group के अंदर NH2 present, then what will happen? ये वाला समझ में आया ना सबको? Anyone having any doubt? Okay. So if I give you last case in which the NH2 group is present in the R, देखो ये वाला part जो है ना, this is R, है ना? And that is having NH2 involved in it. Now, if I ask you what will be the dominant form in the low pH and then intermediate and then high pH, सबसे left में जो आएगा low pH range में, we still have got COOH, we have got hydrogen, एक NH2 है, और यहाँ देखो CH2, how many? 1, 2, 3. 4. There are 4 carbon atoms, so I'll just write it like second, third, fourth, and then NH2. तो ये भी NH3 plus रहेगा ना, and this will also be NH3 plus. So the charge, net charge, total charge is +2. Now if So it it won't is, happen. yeah, It won't happen one by one. It will happen simultaneously. are they having same acidic strength? Yes. There are two logic. The number doesn't suggest like that, first thing. And second thing is, even if you see it through organic chemistry, NH3 plus on the leftmost side has got more plus I effect. It will have less acidic strength. So again, the number suggests that इसके pK को will still call pK1, will call pK2, and will call this one का pK will be pK3, and pK3 is going to be the highest, है ना? और वो number भी suggest कर रहा है, देखो. So this is having the least acidic strength, and that will be because of plus I effect of the alkyl group attached to it, है ना? इतना सारा कार्बन इसके साथ आ गया ना, that's why इनका plus I effect is going to decrease the acidic strength of this NH3. Is it okay? And now if I write the other form, इस बार पहले जो रिलीज होगा डेफिनेटली COH से होगा, but that will not make it deuterion, है ना? It is still having +1 charge, so this is not deuterion. यहाँ पे if I say CH2 and then 1, 2, 3 and then NH2, NH3 plus, not deuterion. But इसके बाद when it releases the next H plus will be released from this side, is going to make it the deuterion, है ना? ये अभी CO minus, this is becoming NH2 plus, NH3, sorry, NH2, and then CH2, and then 1, 2, 3, and then NH3 plus. So we have got this one as deuterion. Now after this, if I release the next one, it will become anionic form, you know? Okay. So now the last part will be COO minus NH2 H, and इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ 1, 2, 3, 4 and then NH2. Okay, this is anion with a charge -1. So now if I put the pK values, ये COH ने लूज किया तो डेफिनेटली दिस इज pK1, ये वाले NH3 ने लूज किया तो दिस इज pK2, एंड ये वाला लास्ट वाले ने लूज किया तो दिस इज pK3. And now we have got this deuterion. Now tell me pi का value. Half pK2 plus pK3. Very good. So if they are asking you in this case pi का value, it will simply be half into deuterion के आगे पीछे जो pK दिख रहा है उनका एवरेज. So we'll say pK2 plus pK3, and if you calculate it, we'll be getting half into 8.95. ये numbers दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में. You're not expected to remember all the numbers. ये नंबर दिए हुए रहेंगे, तो दिस इज 19.48 का हाफ, 9.5 plus 0.24, 9.74. Okay,
एंड नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये अमाइन जैसी चीज है इसलिए तो लाइसिन नाम रखा है, तो इट इज नेट बेसिक। ये देखो स्पार्टिक एसिड नाम रखा है तो नेट एसिडिक रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दिस वाज द डिफरेंस। इज इट ओके? एनी डाउट? So, due to the difference in the pK values, the both the NH3 plus that is formed in the zwitter ion, they release the H plus separately, but they gain the H plus at the same time. No, they'll be gaining at different point of time, but I'm coming from extremely low pH. So Okay. in that range of pH, both of them will be already hydrolyzed. मतलब उसमें H plus will be accepted, है ना? Okay. Any other doubt? चलो, तो we are finishing the chapter ionic equilibrium is over. नेक्स्ट क्लास तो अपना ऑर्गेनिक का है, देन वी कैन हैव अ डिसीजन कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ऑलरेडी कॉमन में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर लिया, आई विल सी दैट बाकी कैसे मैनेज होता है, देन वी विल हैव डिस्कशन ओवर दैट। ठीक है, ओके, वी आर क्लोजिंग इट। चलो, बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir.